सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहां पे है? दिल्ली में है। ऐसे बोल रहे हो जैसे बैठ के आए हो भी सुप्रीम कोर्ट से। तो सीट इज दिल्ली। कैन द सुप्रीम कोर्ट बी इन हैदराबाद? कैसे बताओ ना, यस तो बोल लो, कैसे कहां से आया है? ही से आया है, आर्टिकल 130। अब मैं बोल रहा हूं कैन द सुप्रीम कोर्ट बी इन दिल्ली एंड हैदराबाद एट ए पर्टिकुलर? नो। अच्छा आओ देखते हैं फिर। यस हो सकता है, इट इज फ्रॉम आर्टिकल 130। कैसे पढ़ोगे? सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन दिल्ली, ठीक है। और तो एक तो हो गया दिल्ली कंफर्म, और इन सच अदर प्लेस और प्लेसेस, प्लेस और प्लेसेस, दिस इज द कीवर्ड, प्लेसेस, स्टडिंग बिटवीन द लाइन्स। As the Chief Justice of India, so Chief Justice decide, it will decided by Chief Justice may with the approval of President from time to time appoint. So Delhi or in such other place or such other places. People think, aspirants think, Delhi or either Hyderabad or Bhubaneswar or क्या Guntur. Now tell me one thing. They'll try to trap you. They will say कि Supreme Court can be made, can be like the seat can be in Delhi and only in capital cities. होता है ना capital cities, mindset है, गलत है। Place लिखा है, place लिखा, it can be in Bellary district, it can be in Guntur, Kurnool, जो भी है, ठीक है। बिजोड़ा, सोचो बिजोड़ा पे अगर हो गया सुप्रीम कोर्ट, पूरा केस, जितना सब केस होता है ना वहां पे, होता है ना वो लाइन पे सब कटिंग वटिंग होता है ना यहाँ पे साउथ आंध्रा में, कडपा डिस्ट्रिक्ट, कडपा में अगर सुप्रीम कोर्ट हो गया, सोचो, जस्ट थिंक, ओनली क्रिमिनल मर्डर केसेस। ठीक है। सो इट कैन मीन कैपिटल सिटीज, it can be normal anything because only place is there, nothing else is mentioned. You have to go via the constitution. Clear? So all these things becomes clear when you read Bare Act. This is the reason why polity should be read Laxmikant with Bare Act. There is a reason. I say means there is a reason. Always you should have a reason for everything.